Assalamu alaikum and welcome. क्या अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नकवी और आज हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत फिर से मौजूद हैं। आप उनको जानते हैं इमरान अहमद खान के नाम से। और पिछले कल जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ है उसमें कराची किंग्स के ये ड्राफ्ट कंसल्टेंट थे। और अगेन रिटर्निंग एज ऑलवेज इज उस्मान समीउद्दीन। और अहम बात यह है कि अभी हमने, अगर हमारे पास कॉपीराइट होते तो मैं ओपनिंग में चलाता दिलबर दिलबर, क्योंकि उस्मान और इमरान के दरमियान जो सेक्सुअल टेंशन है वो नॉट इवन जैसे शादाब और कोहली वाली जो एक महज़्ज़बाना टेंशन है वैसी भी नहीं है। वसीम अकरम और सुष्मिता वाली सेक्सुअल टेंशन है ये। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ प्रोग्राम में रखा जाए। मुझे इमरान इसके मैं इंटरप्ट करके ये कह सकता हूँ कि मुझे 2 सेकंड के लिए लगा कि हमारे शो पे इमाम उल हक स्लैश शताब खान स्लैश अब्दुल्ला शफीक स्लैश सलमान आगा स्लैश सऊद शकील शायद आ गए लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सम ऑफ स्लैश बट नो वी ओनली हैव इमीके. Thank you for having me. Or let's skip the intro and get right to the business end. बिजनेस एंड पे ये है कि बिजनेस एंड पे ये है इमरान कि अगर तुम्हें चूज करना पड़ता कि एक डेजर्ट आइलैंड में तुम रहोगे 1 साल, तो तुम शुएब मलिक के साथ रहना चाहोगे या शान मसूद, दो जो तुम्हारे लवर्स हैं? मैं अपनी बेगम के साथ। नहीं नहीं नहीं, बेगम बेगम थर्ड कैटेगरी में, उसको भी नहीं लाया। नहीं, हाँ, सबसे सही जवाब एक ग्रे निकल्स के बैट के साथ. एक ग्रे निकल्स का बैट। शर्त ये कि ग्रे निकल्स का जो लोगो है ना वो एग्जैक्टली 3.75 सेंटीमीटर वाइड हो और 8.973 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा ना हो. ओ भाई, लंबे वाली की बात हो रही है मेरे ख्याल में। और उसके साथ साथ जो है उसमें वो इमरान के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो कि पाकिस्तान टीम की फ्रंट स्लीव के जो 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 टेंडर आई है उसको साइन ऑफ करेगा इमरान, और खुश खुश ही खुश रहेगा। खैर, इमरान को हमने इसलिए दावत दी थी क्योंकि कल ड्राफ्ट हुआ है और मुझे और उस्मान को ड्राफ्ट का एल नहीं पता। तो पिछली दफा इमरान वेरी काइंडली एक्सप्लेन्ड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द ड्राफ्ट्स टू अस, और अब कल वी डिड इट। सो फर्स्टली इमरान, just talk about your own experience. We're sitting at the Karachi Kings table. How happy are you guys with the draft? great experience for me. I think it was an unreal experience being back in that hall, but I was not on the stage. So काफी different experience था, and one that I thoroughly enjoyed. और overall team की बात करूं तो I think we've got there in terms of what we wanted out of the draft. So close to 90-95%, so we've been able to get what we were in search for. Because obviously जब आप draft में जाते हैं तो आप एक preferred picks की list बनाते हैं, but फिर हर slot पे आप आगे मजीद numbers लिखते हैं लोगों के, because अगर एक बंदा कोई और team pick कर ले तो you need to have a backup plan. तो अगर हम उसके हिसाब से जाएं बैकअप प्लान्स प्लस द प्रेफर्ड लिस्ट, तो हम 100% एक्यूरेसी पे रहे in terms of what we wanted out of the draft. So I think all in all good result, but let's see what happens when the tournament starts. इमरान, तो मेरी अभी एक ख्वाहिश है like I आपसे. think मेरी एक ख्वाहिश है कि you have now played every role in the draft, at the PSL draft, apart from as a player. तो अगले साल please can you appear as a player? Which category would you bring yourself in? golden. देखिए, मैंने अपना नाम इस दफा नहीं, मेरा नाम था ना लिस्ट में, इमरान खान का नाम था, उन्होंने पिक ही नहीं किया मुझे। इमरान खान क्रिकेटर को तो कोई और पिक कर चुका था। स्टील बार्स कैटेगरी में गए इमरान खान। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि अगले साल में थोड़ी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाऊं टीम्स को, और फिर प्लैटिनम प्लस कैटेगरी में मुझे पिक किया जाए। Which team would you like to pick you up in the draft? Which team would you most like to pick you up in the draft? I think Karachi is the obvious answer to this, man. Don't put me on the spot like this. अभी
स्पॉट पे तो पुट करना होगा हमें। एक सवाल जो मेरा था, जो विच इज नॉट जस्ट फॉर योर टीम बट आई थिंक ब्रॉडली एज वेल, बट कराची के साथ मुझे लगा कि काफी ज्यादा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ जो पहले पांच पांच छह एडिशंस में जो फेसेस ऑफ द फ्रैंचाइज थे, सब में कोई ना कोई बदलाव आया है, बट आई थिंक लाइक कराची में काफी ज्यादा है। यू डोंट हैव बाबर देयर, यू डोंट हैव आमिर देयर, यू डोंट हैव इमाद देयर, जो एटलीस्ट फॉर कैजुअल फैंस वर द पीपल यू वर associating with Karachi. तो एक के how what do you think, what was the thinking behind it, what was it like losing these players, and then moving forward, is that a concern for franchises right now, कि not just कि यार this guy is our on field leader but also off the field represents the franchise, is the icon or ambassador for the franchise? रीसेट ईयर है बिल्कुल। बाबर ने पिछले साल छोड़ी फ्रैंचाइज 6 सीजन्स के बाद, इमाद और आमिर 8 सीजन्स थ्रू आउट कराची किंग्स के साथ रहे। तो ऑब्वियसली ये टफ कॉल होती है, बट आई थिंक फ्रैंचाइज को एक और डायरेक्शन में मूव करना था, एंड दैट इज द अटेम्प्ट विद द न्यू लोकल कोर दैट वी हैव गॉन विद, हसन अली, शान मसूद and Mohammad Nawaz, who I think all three of them have done really well in their respective roles. They've had great PSLs in the past. ठीक है, national team में कोई अभी है नहीं है, but they still form the core of Pakistan's top cricketers. So they're in that pool. और तीनों की बड़ी एक यूनिक कह लें कि एक्सपर्टीज हैं जो वो लेकर आएंगे। तो उस लिहाज से वेरी हैप्पी विद द न्यू सेट ऑफ लोकल प्लेयर्स। फ्रेंचाइजेस को हमेशा ये होता है कि यू वांट ए फेस टू बी एसोसिएटेड विद द टीम फॉर मोर देन जस्ट वन सीजन, राइट? बिकॉज जो उसकी ऑफ द फील्ड वैल्यू है वो आप ठीक तरीके से तभी लेवरेज कर पाते हैं। जब तक ब्रांड एसोसिएशन नहीं बनती तब तक वो खिलाड़ी बतौर क्रिकेटर तो आपके लिए एसेट है ऑन द फील्ड, क्योंकि वो एक मैच जिता देगा, बट ऑफ द फील्ड एसेट बनने में उसको वक्त लगता है। जिस तरह आप शादाब को देखें विद इस्लामाबाद यूनाइटेड अक्रॉस व्हाट 8 सीजन 7 सीजन्स नाउ, हसन अली पहले जल्मी के थ्रू ही रोज थ्रू द रैंक्स। तो इस तरह की एसोसिएशन बनने में वक्त लगता है, और फ्रेंचाइज का गोल यही होता है कि अगर एक लोकल कोर या एक रिलेटिवली सीनियर क्रिकेटर्स की कोर को आप लेकर आ रहे हैं तो देर एबल टू सर्व यू फॉर मोर देन जस्ट अ ईयर। So hopefully Shan, Hassan, Nawaz, this is just the start of a very long and successful run for them with the Karachi franchise. तो यही सवाल, इनफैक्ट आई थिंक व्हेन वी ओपन इट लाइक हैव अ डिस्कशन, आई थिंक ये और टीमों में भी दिखाई देता है, where I think like now we're at the stage almost a decade into the PSL, जहाँ पे अब जो टीमों के साथ जो ओरिजिनल खिलाड़ी नुमाया थे मुख्तलिफ आ रहे हैं। But I just wanted to ask कि इस ड्राफ्ट में, like with every draft I'm guessing like there's some big players that you're looking to pick up, or there's like some kind of somebody who's like worth, जिसकी वैल्यू में भी सस्ते में मिल रहा है या जो कुछ भी। What was something that in this draft you felt was a thing of that nature, जो शायद तुम लोग के साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ हो? आई थिंक उस पे जाने से पहले कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि ड्राफ्ट में हर टीम ना अपनी मुख्तलिफ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के साथ आती है। तो इस दफ़ा मुल्तान की एग्जांपल ले लें, उनकी ऑल लोकल रिटेंशंस थी, तो सबको मालूम था कि ड्राफ्ट में उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स के लिए जाना। वेयर एज कोयटा एंड कराची, उनके पास लोकल प्लैटिनम प्लेयर नहीं था। तो एवरीवन न्यू के आउट ऑफ फ़खर, आसिफ, नवाज एंड मोहम्मद आमिर, इन दोनों टीम्स ने किसी 2 प्लेयर्स के लिए जाना ही जाना है इन प्लैटिनम, बिकॉज द रूल्स रिक्वायर यू टू हैव एटलीस्ट 1 प्लैटिनम लोकल प्लेयर। फ़खर ऑफ कोर्स लाहौर ने उसको राइट टू मैच लगाना ही लगाना था, एवरीवन न्यू दैट एज वेल। तो फिर आमिर और नवाज ट्रेडेड प्लेसेस, नवाज वेंट टू कराची एंड आमिर वेंट टू कोयटा। तो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स सबकी डिफरेंट होती हैं, और ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी होती है गोइंग इनटू द ड्राफ्ट। और ये कॉन्टेक्स्ट सेट करते करते मैं आपका ओरिजिनल सवाल भूल गया हूँ, तो आप प्लीज़ एक मतलब अपना सवाल भी मेरा रिपीट ये कर था दें, कि मैं इस फिर उस like सवाल का was जवाब there दूंगा। something in specific that was like a big value? Was there any Okay, I players know, that you I get that. were like? So I think कुछ एग्जांपल्स इसमें स्टैंड आउट करती हैं। वन दैट इज टॉप ऑफ माय माइंड बिकॉज मैं उसमें बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व था कल ड्राफ्ट पे, वाज अरफात मिन्हास, जो कि Okay. is one of the future stars of Pakistan cricket, all rounder, under 19 level के हैं, और वो हमें luckily available हो गए in the silver category, and that happened because Multan could not pick a
local player, I think, if I'm not forgetting, in that category. और फिर आखिरी बारी हमारी थी तो हमें वो मिल गया. तो Arafat Minhas is one player who stands out for me. The other one that stands out for me is Jamie Overton, जिसको हमने supplementary category में लिया. We're just going through his numbers. दुनिया उनको एज अ बॉलर जानती है, बट बैटिंग में नंबर 5, 6, 7 पे ठीक ठाक उनका स्ट्राइक रेट है 150 एंड अबव. तो वो मुझे लगा वाज अ ग्रेट बाय फॉर अस एट द ड्राफ्ट. बट आपकी कोशिश ये होती है ड्राफ्ट में एमर के कई खिलाड़ी आपको यू हैव टू गो फॉर देम इन द मेन कैटेगरी बिकॉज आपको पता है आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा. गुड एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी समवन लाइक अ डैनियल सैम्स और जॉर्डन कॉक्स जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, कि अगर वो उसको गिरने देते अगली बारी तक तो वो चला जाता. बट कई प्लेयर्स पे ना आपकी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी कम होती है तो आप रिस्क ओपन लेकर चलते हैं. Up it pays off at times and it doesn't pay off at times. That's something you learn to live with. तो ये दो एग्जांपल्स जो हैं अरफात मिन्हास वाली और जेमी ओवर्टन वाली, they stand out for me because I think ये दो अच्छे हैं. And another one is सिराजुद्दीन जो emerging fast bowler है. If you guys have 2 minutes, just YouTube and see some of his bowling clips to know how good he is. We were very lucky. वो हमारी नंबर 1 पे था प्रायोरिटी में एंड हमारी मेरा ख्याल है 5वीं या 6ठी बारी थी emerging में, तो हमें वो अपनी बारी में मिल गया एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमें हमारा नंबर 1 प्रेफरेंस जो है वो मिल रही है इन द इमर्जिंग राउंड. तो ये 3 एग्जांपल्स अभी माइंड में आ रही हैं, बट इफ आई कैन थिंक ऑफ मोर आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. Usman, just like from your perspective of the fact that you guys have been covering the draft now for whatever 8-9 years, like I think एक चीज जो मैंने फील करना शुरू की है कि बट्टा फास के भी कमेंट्स पे I feel like people know about domestic players so much more than they did in the past. Like okay, there's just like a lot of awareness of अगर one day या test squad pick हो रहा है तो fringes में कौन हैं. I think एक वक्त था कि चलो कुछ nerds जाके कायदे आजम के leader board देख के बता देते थे. But now, you know, there's names being thrown at you constantly that people have seen. Not only मतलब एक तो आपकी PSL है, but also जो domestic crickets to an extent is televised and people are following that. How has the coverage of the draft evolved for you guys? Yeah, I mean, it is. There's like there's that democratization of information is out there for sure, so that you don't have to be like a cricket journalist to know ke kaun sa player is there. In fact, sometimes, and especially in my case, like cricket journalists like myself are the ones who are least informed about the players out there. You know, there's a lot of information out there. There's a lot of footage and information being passed about players. Like this year, for example, we had somebody new do the live blog of the draft for us. And you know, our concern was shuru mein ke will they know what's going on inside? Like, you know, हम लोग अपने reporters पहले use करते थे हमेशा से. So this time we used Ravel, who does like ball by ball commentary for us and stuff. And we asked him, and we were like, I was at least slightly concerned, will he have that kind of level of insider knowledge or just know about players and so on? And like, if you go through the blog, like he knows. And you know, it's just because the information is out there if you seek it. वो इतनी जो leagues की information, especially T20 information, is so like there's so much of it floating around that some guy sitting in, I don't know, Jamaica will know exactly. अभी जो तुमने सिराजुद्दीन की बात करी है ना, there's good chances that some guy sitting in Jamaica has seen Sirajuddin's videos and he's already speaking to somebody at the franchise in the CPL saying कि यार इस पे नजर रखना. You know, and then that information filters out. So I remember doing the first draft ever PSL पे हम लोगों ने करा था, and you know, that point it was like a novelty thing. कि अच्छा इसमें ये बड़े नाम होंगे, वो बड़े नाम होंगे. Nobody really cared about कि यार strategy क्या है, tactics क्या है. And I don't know what it was like from the inside. मुझे जो थोड़ी बहुत insight मिलती थी from guys like Hassan and Rehan and some, you know, a couple of you guys were involved. There seemed to be some thinking about it. Nabil at Batta, there was always like some kind of thought going into it. मगर वो जो thinking थी वो बाहर नहीं आई थी. And now it's actually wonderful, but also intimidating for somebody like me to see the level of tactical nous and awareness and strategic nous and awareness that just your average cricket fan will know about a draft. You know, that's kind of out there. So yeah, that way it's great. My actually, I wanted to ask Imran,
and you can answer this later, or we can come back to a question that Imran had. But I wanted to know a bit more about Phil Simmons coming in as coach. I think that's like a genuinely intriguing appointment at Karachi. They've run through their coaches a little bit over the years, but Phil Simmons seems like, and like from what I hear, it's it's a multi-year contract, so it's not just a short-term thing. At least 2 साल की बात तो चल रही है, but Phil Simmons has done good things wherever he's gone, generally, as a coach. And that must be pretty exciting for you guys and intriguing for everyone outside. This साल जो level of coaches बाहर से आए हैं in the PSL, that's actually also a thing to just kind of keep an eye on and maybe even discuss on this. No, I think that's a great point. Mike Hesson at United, Shane Watson at Quetta, and then Phil Simmons at Karachi, of course. Simmons World Cup जीते हुए हैं वेस्ट इंडीज की टीम के साथ. उन्होंने अफगानिस्तान की कोचिंग की हुई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग की हुई है, और खुद क्रिकेट भी इतनी तगड़ी खेले हुए हैं एक ऐसे टाइम पे जब वेस्ट इंडीज की टीम वाज वेरी वेरी कम्पिटिटिव. तो मुझे लगता है कि उनके आने से ना एक degree of stability ड्रेसिंग रूम में मिलेगी. एंड आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ ही वर्क्स विद शान मसूद, क्योंकि शान भी एक बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हैं, कूल हैं, कैलकुलेटेड हैं, जो प्लान्स बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे लगता है उस लिहाज से दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे. बिकॉज सिमंस इज नॉट द काइंड ऑफ गाय, एटलीस्ट इन माई इंटरेक्शंस विद हिम, वो ऐसे नहीं है कि वो अपनी ओपिनियन आप पर इन्फोर्स करना चाहेंगे. वो आपकी बात सुनेंगे. कल ड्राफ्ट में कई मरतबा हमारी आपस में बातचीत हुई जिसमें उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुना, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी, and whatever he ultimately then decided was in the best interest of the team, you could tell. तो मुझे लगता है कि मज़ेदार होगा शान मसूद वर्किंग विद फिल सिमंस एट कराची. अच्छा, आप नाजरीन स्लैश सामीन आपको ये भी बताते चलें कि इमरान को एक तो कराची आने से सख्त नफरत है, इनकी हर वक्त यहाँ तबीयत ख़राब हो जाती है. कोविड भी इनको कराची में हुआ था. लैंड करते ही इमरान हम जैसे दोस्तों को फ़ोन करते हैं, यार आई एम इन टाउन, सुपर बिजी, विल ट्राई एंड मीट मे बी वन डे. आप कहते हैं हाँ इमरान तू बड़ा बिजी आदमी यार, कब भी मिल ले. और फिर हर रात इमरान की स्टोरी में शान मसूद और इमरान किसी न किसी रोमांटिक जगह पे बैठे हुए रेस्टोरेंट में तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं. तो शान मसूद और फिल सिमंस के साथ आई एम श्योर डबल डेट्स पे भी जाएंगे इमरान. Are you there? I am. उससे मेरा जो फॉलो अप सवाल ये था कि जब हम ये फ्रेंचाइजेस आते हैं, T20 लीग्स लास्ट एनीवेयर बिटवीन लाइक 6 वीक्स और समथिंग, तो कितना एक्चुअल असर पड़ सकता है कोच का on a team when he's coming in only for like क्या कहते हैं for a very short period of time? I think multiple सालों के लिए कोच हो तो एक कल्चर को ड्राइव करने में आसानी होती है, बट आप सिर्फ इस तरह से सोचें कि गाइस लाइक अरफात मिन्हास एंड साद बेग जो आपके अंडर 19 के कप्तान हैं, वो एकदम एक ऐसे ड्रेसिंग रूम में आते हैं जहाँ पे कायरन पोलार्ड भी हैं, फिल सिमंस भी हैं जो कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच हैं, वहाँ शान मसूद भी हैं, वहाँ हसन अली भी हैं. तो नेचुरली उस बच्चे की डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक होता है. इसकी एक और एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड है. अगर वहाँ पे माइक हेसन है तो जो माइक हेसन ने काम किया न्यूजीलैंड के साथ, अगर उस कल्चर की 10% भी पास ऑन होती है टू गाइज लाइक उबैद शाह एंड हुनैन शाह, तो आई थिंक उसमें बेनिफिट ही है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी और PSL का भी. तो आइडियली येस यू वुड वांट कि एक फॉरेन कोच आपके साथ ज़्यादा देर के लिए रहे, उसके साथ लोकल प्लेयर्स ज़्यादा देर ट्रेन करें, बट लेट्स सॉर्ट ऑफ एडमिट कि क्रिकेट की रियलिटी ऐसी है कि दैट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल. तो जो 6-8 हफ्तों की विंडो मिलती है उसमें जस्ट बीइंग एबल टू स्पेंड टाइम विद दीज पीपल, हेयर आउट देयर आइडियाज़, कुछ उनकी प्रैक्टिस की टेक्निक्स या जस्ट डीलिंग विद प्रेशर, अप्रोचिंग योर मैच डे, उस किस्म की चीज़ें भी अगर आपके यंग लड़कों को पास ऑन हो रही हैं, I think that's a great win. Like I can't think of anything negative that comes with Umair bin Yusuf and Saud Shakil getting to spend time with Shane Watson this year. So मुझे लगता है it's still a win for the teams and for the players. And then I think just to round up this conversation, and I want to ask both of you this. ये जब इमरान ने बात की है ना, like where और जो हमने सारी गुफ्तगू की, सबसे पहली चीज़ की थी PSL की वजह से आपके जो पूल है खिलाड़ियों का, जिनकी ना ही सिर्फ उन्हें
मौका मिल रहा है कौमी टीम के लिए, बट उनको शोहरत मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो बढ़ रहा है, राइट? सेकेंडली, यू हैव दिस क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज, वेदर इट्स पावल आपके लॉकर रूम में, या सिमंस है, या माइक हैसन, whatever whatever, ये हमें इस जनरेशन ऑफ कौमी खिलाड़ियों के साथ दिखाई दिया है कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है कि शाहीन, बाबर, शादाब, हसन, नसीम, whatever came up through the franchise side. और तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, और अब मतलब वी डोंट नीड द वर्ल्ड कप टू नो दिस, कि क्रिकेट बहुत ही लॉपसाइडेड है, बड़ी टीमें एक दूसरे से खेलती हैं, बाकी टीमें किसी और के ना नहीं खेल पाती। तो ये जो मैंने थोड़े अर्से पहले इस पे लिखा भी था क्रिकेट फॉर क्रिकेट, आई थिंक दिस इज द फ्यूचर आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस. Do you think that within 10 years we will see franchise cricket take over international cricket in terms of regularity? शायद importance में ना ले पाए वर्ल्ड कप, अभी भी सबसे बड़ी चीज हो, but in terms of जो players का main focus है, जो sport का main focus है, do you guys see franchise cricket taking over? And is it going to be 10 years? Is it going to be 20 years, or maybe even earlier? What do you think? Yeah, I'll go first. I mean, I think it's already happening. The gradual move is there. Yeah, I don't think it's going to take as long as 10 years. I think it's going to be less. In fact, Yeah. I've been thinking in recent days of the idea of how dysfunctional so many cricket boards are right now. Yeah, like if you think about Sri Lanka की suspension चल रही है, जिम्बाब्वे के साथ आप बाकी में सवाल पूछ सकते हैं कि भाई फुल मेंबर क्यों है वो, जब उन्होंने पिछले 6 आईसीसी टूर्नामेंट्स में से 5 मिस करा है, ना उनकी कोई बायलैटरल इतनी कोई वैल्यू की होती है, ना उनका डोमेस्टिक सिस्टम इतना कुछ चल रहा है, फिर ये पाकिस्तान की अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रही है पीसीबी में, Bangladesh is never a stable board. Like if you look at how dysfunctional these main boards are, so for me that only shows like एक opportunity है for bigger franchise expansion, maybe even beyond the IPL franchises. IPL franchises तो वैसे ही expand कर रही हैं, अपनी footprint हर मुल्क में छोड़ रही हैं. 100 में भी I wouldn't be surprised if within the next 2-3 years there's private investment in the 100 from IPL franchises. So once they start controlling your contracts, players' contracts, so then तो it's a fait accompli, right? फिर तो franchises have taken over. अभी जैसे जोफ्रा आर्चर के ऊपर अभी बहुत मजे की स्टोरी हुई है that Jofra Archer, Mumbai signed him for a couple of years, but then they released him because of the injuries. And Robert Keane ने बोला कि we want to take control of Jofra and Jofra's rehab to make sure that he's fit to play for England, which is a bit of a contrast from before where they were happy to let him play in the IPL as long as it served England's purpose. लेकिन आपने जैसे ही ये करा, so footage emerged of Jofra playing for his old school in Barbados, I think, without like the ECB knowing about it. Like they asked the ECB के भाई ये तो खेल रहा है, आपको मालूम है? ये कहता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम. I think we're already in that situation where players have kind of seen कि यार central contract is not the be all and end all of life, and there are many opportunities. And once more kind of franchises break out, once more leagues will come up, I think there's still scope for more leagues to come up. And then it's only inevitable. I don't even know if it's going to take 10 years. Usman, I don't think आपको और leagues भी चाहिए for this to take effect. आप IPL की example लें, back when it started to where it has come now, it's a longer time period. Big Bash ने expand किया, फिर थोड़ा सा contract कर लिया, but take the PSL as another example. अभी 6 टीमें 2 साल बाद अगर मजीद 2 टीम्स ऐड होती हैं तो इसमें आपको 10 से 14 दिन की विंडो मजीद ऐड करनी होगी. So commercial imperative for the leagues to expand will continue to exist. Rights values for your bilateral cricket will continue to go down. And at some point, in a bid to coexist with 1 billion leagues taking place, every league will then, or every home board will then have to prioritize. अब अगले साल पीसीबी ने होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है फेब मार्च में, बट जैन में पीसीबी ने ट्राई सीरीज रखी हुई है. तो how will that impact the PSL? Ultimately, you have to decide कि यार मेरे लिए वो 6 या 7 units of a try series ज़्यादा important है, या मेरे लिए 34 matches की PSL that drives bums on seats, gives me the highest TV ratings,
and generally there's an upswing in the country in terms of sentiments. तो आपके लिए वो ज़्यादा important है या एक bilateral या multilateral series जो आपको rights में उतने पैसे नहीं ला के देगी? तो जब ये इकोनॉमिक इम्पेरेटिव ज़रा ज़्यादा इन योर फेस हिट करेगा तो बहुत एक नेचुरल वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली ये है इक्वेशन के league cricket will in some way or the other, it has already impacted and the impact will continue to grow in the years to come. आई थिंक कि उसमें एक ये भी चीज़ थी कि शुरू में आपको एक था कि भाई आईपीएल सारे अच्छे खिलाड़ी ले लेगी एंड यू नो दैट विल काइंड ऑफ रूइन द वैल्यू प्रोपोजिशन जो बाकी लीग्स की है। और उसमें आई थिंक पीएसएल का बड़ा दिलचस्प रहा है सिचुएशन, क्योंकि अभी भी जो नाम है इंटरनेशनल प्लेयर्स के उसमें ऐसा कोई नहीं है जो वर्ल्ड कप के वर्ल्ड 11 में आ रहे होंगे नाम या जो कुछ भी, मे बी यू नो फ्यू प्लेयर्स, बट एक्चुअली दैट्स वर्कड आउट फॉर द पीएसएल। ऑलमोस्ट इसका एक रेपुटेशन बन गई है कि अगर आप एक बिग थ्री के प्लेयर हैं जो एक यू नो अभी तक आपका इतना नाम नहीं है, अभी आप थोड़े इमर्जिंग हैं, तो आप पीएसएल जैसी लीग में आओगे और आपका फिर वहाँ नाम बनेगा एंड यू आर एबल टू लेवरेज दैट इनटू अ बेटर करियर। और उसकी वो टिम डेविड आई थिंक सबसे अच्छी मिसाल है। बट इंटरेस्टिंगली कि उसका बायन पाकिस्तानी फैंस की तरफ से भी है, जहाँ शुरू में बहुत रोला रपा होता था कि अच्छे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे और वो रेलू कुत्ते और फलाना ढमकाना। एट दिस पॉइंट आई थिंक टीम्स ऑब्वियसली इट्स गुड टू हैव वन और टू डेज, बट इवन फैंस के लिए जो पाकिस्तानी ए लिस्ट खिलाड़ी हैं उनकी आमने सामने पे ज़्यादा शोर हो रहा था एज कम्पेयर टू कि जी फॉरेन प्लेयर क्यों नहीं आ रहे, अच्छे नहीं आ रहे। वो लाइक दिस विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज अगर हर लीग की ऐसी यूएसपी बन जाए डिफैक्टो के यार ये टॉप टियर है, ये थोड़ी सी लो है, थोड़ी सी लो है, तो आप अगर इसमें नाम बनाओगे तो आप इसमें आ जाओगे। यू नो यू डू वेल फॉर अ बीपीएल क्लब एंड यू गेट अ बीपीएल कॉन्ट्रैक्ट that lands you PSL contract, that lands you an IPL contract. That process has actually become quite clear for a lot of players. तो यानी कि एक जो तरीकेकार भी है कि आप अगर सिर्फ पहली सीढ़ी पे चढ़ जाएं तो देन बाकी फ्रेंचाइज वर्ल्ड में आप काफी आराम से यू नो यू कैन मेक a name just by playing one series well. So I guess all of us are I'm in not sure agreement. that works for me. I'm not sure that works for me as a PSL fan though. मतलब ठीक है, ये अगर reputation बन भी गई है, I think there are ways to address this, and those ways need to be explored at the क्या leagues ways होंगे? level. वो अमूमन ड्राफ्ट करीब आता है ना, हाँ, तो अमूमन ड्राफ्ट करीब आता है ना, तो बहुत सारे कमेंट्स पहले आते थे 6 साल पहले कि इमरान नज़ीर और अब्दुल रज़ाक क्यों नहीं है, बट पिछले 3-4 सालों में सवाल आता है कि डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल क्यों नहीं है। तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि मल्टीपल रीजंस होती हैं जिनकी वजह से खिलाड़ी नहीं खेलते पीएसएल। एक है आउट एंड आउट नेशनल कमिटमेंट, राइट? सो अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड हो अपने मुल्क की स्टेट टीम के साथ या अपने मुल्क के क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो आप नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक सीजन फॉल्स इन द विंडो वेयर यू हैव द पीएसएल। सो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई नेशनल मैचेस नहीं भी खेल रही अपनी अवे टूर्स या होम टूर्स, वो उस वक्त अपनी स्टेट क्रिकेट ज़रूर खेल रही होगी। सो दैट इज़ अ चैलेंज फॉर यू व्हेन इट कम्स टू फुली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स लाइक ग्लेन मैक्सवेल। ये चीज़ कुछ खिलाड़ियों पर नहीं अप्लाई होती थी, वो आकर खेले पीएसएल, जैसे कि शेन वॉटसन, जैसे कि क्रिस लिन, जैसे कि टिम डेविड, जैसे कि बेन कटिंग। तो हाँ, एग्जैक्टली। सो ये है एक रीज़न जिसकी वजह से खिलाड़ी नहीं आते। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से खिलाड़ी नहीं आते वो है वैल्यू that they get out of playing in Pakistan. So bear in mind when foreign players come and play in Pakistan, तो काफ़ी restricted होती है उनकी movement, ठीक है? Whereas if you compare it with some of the other leagues in the region, अगर वो दुबई में लीग खेल रहे होंगे तो दुबई का एक पार्टी सीन है, they're able to unwind, तो अगर वो वहाँ पे 6-8-10 हज़ार डॉलर कम भी कमा रहे होंगे, उनके लिए वो एक attractive proposition रहेगी। So ease of movement and the ability for players to experience life outside of the hotel and the stadium, that's one. और दूसरी चीज़ जो मेरा ख्याल है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए अगर आप पीसीबी के पर्सपेक्टिव से भी सोचें, देखिए 10वें साल में फ्रेंचाइज की जो वैल्यू है वो दोबारा से कैलकुलेट होनी है, रिन्यूअल प्रोसेस में जाना है। तो इस मोमेंट पे पीएसएल के ब्रांड को बड़ा करना पीसीबी के इंटरेस्ट में, क्योंकि 10वें साल दे विल देन बी एबल टू नेगोशिएट अ हायर वैल्यू, ठीक है? अभी ये एक्सपेक्ट करना कि फ्रेंचाइज ओनर्स मजीद पैसा लगाएं विदाउट हैविंग दैट राइट ऑफ ओनरशिप इन परपेचुटी इज द इक्वल ऑफ सेइंग कि जी मैं किराए के घर में रहता हूँ और मैंने जून के अंदर अपने लैंडलॉर्ड के साथ रीनेगोशिएट करना है रेंट,
लेकिन जनवरी के महीने में मैं अपने खर्चे पे मार्बल की टाइल्स भी लगा दूं, इन्वर्टेड एसी भी लगवा दूं, महंगा पेंट भी करवा दूं और एक पोर्च में नई गाड़ी भी खड़ी कर दूं। तो मैं तो ये कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे होगा यार मैं जून में अपना जब रीनेगोशिएट कर रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू कम रखूं ताकि मुझे अगले कुछ सालों के लिए कम रेंट देना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, which is why expecting franchise owners to pump in more money when they have no visibility on their ownership status after the 10-year mark, ये एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। And I think it's in the PCB's interest to pump in more money from whatever revenue streams they have towards making the PSL a bigger brand. And one key aspect of making it a bigger brand is to have more top quality players in the PSL. Yeah, that's a great point. और आई थिंक इनफैक्ट जहाँ पहली बात पे तो पीसीबी कुछ कर सकता है, जहाँ तक मूवमेंट की बात है वो तो पप्पा के हाथों में। पप्पा जब डिसाइड करेंगे कि मुल्क में लोगों को आज़ादी है घूमने फिरने की, तो फिर प्लेयर्स को भी आई थिंक थोड़ा मिलेगा, बट मुल्क के हालात पे डिपेंड करता है। बट दैट is the end of the first part of our episode with Imran, where we want to discuss the PSL draft. Imran, अगर आप हमारे साथ रहें थोड़ी देर के लिए तो हम अब क़यामत के मंजर भी डिस्कस करेंगे अपनी अगली एपिसोड में, जो था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का डे 1 फ्रॉम पर्थ। But till then, thank you for listening in, and we'll catch you again soon.